pick up your introduction. Yes, ma'am. Uh, Good afternoon, ma'am. Thank you for giving me opportunity to introduce myself. My name is Abhishek Kuswaha. I belong to Gazipur. At present, I'm living in Lucknow, Uttar Pradesh. I did my diploma in electrical engineering, and I've completed my BTech in electrical engineering from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. And after that, I did 1 year apprenticeship training from Uttar Pradesh Power Corporation Limited. And beside this, uh, I did a 6 months training in PLC and SCADA also. And I qualified GATE exam 2 times in 2022 and 24. Thank you. Okay. So, are you working currently, Abhishek? No, ma'am. Actually, actually, I'm preparing for a government exam, so I'm Okay. not working right. कौन से पास आउट हो? Ma'am, in 2023, 23 पास आउट हो. कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं लिया आपने? no, ma'am. क्यों? Uh, Actually, ma'am, I thought I should be join a PSU because it is also a mixture of a government and public sector. Sorry, private sector. So it is a good for me, and it gives me a good opportunity for my growth also. That's why. But why PSU? PSU क्यों? और भी बहुत sectors हैं. Yes, ma'am. Because ma'am, PSU works for the social welfare, not only making a profit. And there are many private companies which are make works. A lot of companies which are working in the making a profit, not for the social welfare. So that's why I like a PSU most. सोशल वेलफेयर के लिए है. आपने अभी तक सोशल वेलफेयर के लिए क्या किया है? आप कैसे Uh, कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के लिए? Actually, ma'am, in a Corona pandemic time when I was in my village, I worked as a volunteer for my health center, which is located in my village for 1 and 2 months. So I did this thing, and also I helped people who needed physically or financially. अभिषेक, इज इट द ओनली रीजन आप सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं इसलिए पीएसयू में ज्वाइन करना चाहते हैं? बल्कि आई विल से दैट देयर नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज लाइक टाटास एंड ऑल दैट, दे हैव Yes, बीन ma'am. हेल्पिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स नेशन बीइंग इन प्राइवेट करिकुलम टू. तो अकेला Yeah. पीएसयू में आके तो नहीं सर्व कर सकते ना आप? Yes, ma'am. But actually, ma'am, besides social welfare, it gives me a lot of opportunities for growth also, ma'am. Because ma'am, in pandemic time, there are many workers who lose their job because they are working in a private sector. But in a PSU, it is a security for me and my family also. So that's why. क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है आप में? Uh, Actually, ma'am, my strength is I'm a very optimistic person and also a hardworking. And uh, and my weakness is, ma'am, I'm not very fluent in speaking English, so it is my weakness. स्ट्रेंथ क्या बताइए आपने? Ma'am, I'm a very optimistic person and also hardworking. पास्ट एक्सपीरियंस बता दीजिए जिसमें आप काफी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को पोर्ट्रे कर रहे थे. Actually, ma'am, basically I was belong to a farmer family, so when I passed in class 12, I didn't have any information what I have to do. So I searched everything about what should I do for engineering or a bachelor's, sorry, BA or BSc. So I decided to go with the engineering field because it gives me a lot of opportunity in a in every sector. So it is my optimistic side because it is a likeness. आपने इंजीनियरिंग चूज की, दैट इज योर ऑप्टिमिस्टिक साइड. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ये कैसे ऑप्टिमिस्टिक हुआ? Ma'am, it is not choosing a engineering side because after qualifying my 12th, I don't have any opportunity to study. So I decided to find a way. So I got a scholarship by state government. So in this field, because I got information. So it is my optimistic side because I searched for a good, not what say, encourage myself and left studying. So it is the side. ओके. अभिषेक, Yes. हॉबीज क्या है आपकी? Ma'am, actually, I don't think I have hobbies. I think I'm fond of sketching, cooking, and listening music. So, डू यू yes, बिलीव ma'am. इन सेल्फ मोटिवेशन, अभिषेक? एंड इफ यस, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड? Yeah. Actually, ma'am, I'm already a self-motivated because I did everything with my own because I also studied by getting a scholarship without any help. So I never, what to say?
demotivated anytime. So I keep myself motivated. I स्कॉलरशिप don't have any. मिली थी आपको? लाइन क्लियर नहीं हुई मुझे। Actually, ma'am, I got a scholarship by UP government because I got a good rank in a what is in a entrance exam in a counseling. So that's why, because it is a criteria in UP government. If you are not get a good rank in a entrance exam, you are not going to get a scholarship. So that's why. आर यू गुड टीम लीडर और टीम प्लेयर? Ma'am, I'm a good at team leader and also a team player, ma'am. Both. पास्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने टीम को लीड किया हो, और कितने लोग को लीड किया हुआ अभी तक? Ma'am, basically I in my college project, also in diploma, which is a transformer construction, I lead my team to construct the transformer, basically a welding transformer. So I what to say, I advise them what they have to do, and I divided everything to them. So in this way, I lead them. कितने लोग को लीड किया है? Ma'am, around in my team around 10 to 14 people in diploma, and also leaded I lead in my BTech. What say when I was in BTech, then I also lead a team, ma'am. Actually, ma'am, may I speak in Hindi, ma'am? If या यू कैन। Thank you, मैम। एक्चुअली मैम जब मैं डिप्लोमा में था मैम, तब मैंने अपनी टीम को लीड किया था, क्योंकि उस टाइम में मेरा प्रोजेक्ट था ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो मैम वहाँ पे हम लोग 14 पीपल्स थे, तो वहाँ पे मैंने उनको जितने वर्क थे मैंने उनको उसमें डिवाइड कर दिए थे, जिससे कि वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें। और मैम जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी, तो हम लोग एक ग्रुप बना के मैम उसको सॉल्व करते थे कि किस टाइप की प्रॉब्लम है। अगर किसी टीम मेंबर में भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैम उसको हम लोग आपस में बैठ कर ही सॉल्व करते थे। सो चलो इन दिस 14 वे। को मैं 50 कर देती हूँ। 50 लोग को लीड कैसे करोगे? मैम बिकॉज मैम टू लीड द 50 पीपल मैम आई हैव टू, मैम मुझे हर 50 लोगों को मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि 50 लोग हैं, तो मैम उसमें से 10-10 को मैं वो कर दूंगा। उनमें से एक को मैं सुपरवाइजर, उनमें से एक को मैं वर्क दे दूंगा कि वो 10 लोगों को लीड करेंगे, वो 10 लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे। तो मैम इससे ईजी हो जाएगा मेरा काम, इससे मैं उनको लीड अच्छे से कर पाऊंगा और मुझे हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। और कुछ चीज़ें होंगी जो 10 पीपल, जो 10 लोगों का टीम होगा, उनमें से जो उनका लीडर होगा वो उसको खुद से भी सॉल्व कर सकता है। सो इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और पीपल अच्छे से वर्क भी करेंगे लोग उस टीम में। इफ यू हैव टू कीप योर टीम मेंबर्स मोटिवेटेड, हाउ वुड यू डू दैट? कैसे रखोगे अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेटेड? मैं उनको हमेशा से उनको इंसेंटिव देके, उसके बाद उनको ये बताना कि हमारा काम ही हमारा मेन प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारा काम ही हमारा मेन वो मोटिव है। इससे हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी, इससे हम लोग भी ग्रोथ करेंगे और ये हमारी फैमिली के लिए भी अच्छा है मैम। और हम लोग प्रॉफिट के लिए नहीं, हम लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो जिससे मैम हम लोग खुद सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और ज़्यादा काम करेंगे। ओके, फाइन, राइट। अभिषेक, सी देयर आर सर्टेन नेगेटिव्स व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू। एक तो एंजाइटी में क्यों हो इतना हरेडली, डर डर के इतना क्यों बोल रहे हो? वही सबसे पहला एक्चुअली मैम नेगेटिव है। एक्चुअली मैम ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैम बस नहीं, इसलिए। दैट्स फाइन इफ इट इज योर फर्स्ट टाइम, लेकिन वही ना, आपको अच्छे से थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अभी अच्छे यस से मैम। मैनेज ही नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा उसको यस मैम। पहले तो वो रिवाइज करना है हमें। यस जस्ट मैम। अ सेकंड। चलो, सी आपकी स्टार्टिंग ही पहले हो गई इंट्रोडक्शन से, राइट? यस तो मैम। इंट्रो यस से मैम। जब आप स्टार्ट करते हो कि आपने क्या किया, ये लुधियाना दिस ऑल दिस डिप्लोमा बीटेक 1 ईयर ट्रेनिंग 6 मंथ्स ट्रेनिंग 8 to 10 क्वालिफाइड। चॉइस ऑफ यस वर्ड्स मैम। को थोड़ा इंप्रूव कर लो। गुड मॉर्निंग यस मैम, मैम। आई एम अभिषेक। यस मैम। आई कम फ्रॉम यस मैम। सिटी, जो भी आपकी सिटी आ जाती है। कमिंग टू माई academic curriculum, I've done my diploma from this and this university, and later I यस मैम। pursued my bachelor's in education, या जो भी आपने किया है, in this stream, in the terms of you can say expertise, right? ये बताया आपने। Also, I have यस मैम। done a lot of training period. There was a training period which I have taken from this organization. आप बता सकते हो यस मैम। पूरा ट्रेनिंग का। And apart from it, आप क्या बोल सकते हो, that I have number of achievements where I was able to bag gate twice in the journey of my BTech। कुछ भी आप बोलिए इस तरह से। मतलब मेन सिटी एकेडमिक्स, इसमें ओके बाद मैम। आपका प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जो मर्जी एक चीज डिस्कस कर लो जिसपे आप चाहते हो यस मैम। इंटरव्यू डिस्कस करें, एंड देन इज योर यस मैम। अचीवमेंट। हो गई ये 5 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके बाद आपने ये बोलना है जैसे कैंपस प्लेसमेंट नहीं लिया, बिकॉज मैम आई वाज वेरी मच इंक्लाइंड टू गो टुवर्ड्स पीएसयूज। मैं पीएसयू में ही जाना चाहता था। व्हाई यस मैम। पीएसयू?
जो आप सोशल वेलफेयर और ये बोल रहे हो ना मैम, सिक्योरिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी और वर्क लाइफ बैलेंस आर टू नेगेटिव्स यू शुड नेवर सी इन इंटरव्यू, right? Okay, What ma'am. you have to say in Yes, your interview is, ma'am, I would go for this. Why PSUs, ma'am? Because first is that PSUs are the prestigious organization, and they are working yes, for sir. the welfare of the nation in the indirect manner. So we get the job satisfaction. आपको job satisfaction मिलती है क्योंकि आप अच्छी country के लिए, अपनी काम country के लिए काम कर रहे हैं, right? The Yes, diversity sir. which it holds and the kind of progressive promotional career you are going to get in PSU, that is important. Progressive Okay. promotional career कि आप आगे बढ़ेंगे, right? और उसके सिवाय Okay. अगर ये भी नहीं बोलना आपको, मैम डाइवर्सिटी होती है काम में, डायनामिक होता है काम। प्राइवेट में Yes, आप sir. काम करते हो तो कुछ स्टैटिक हो सकता है, मोनोटोनस हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट को प्रोजेक्ट मिले ना मिले श्योर नहीं है। Yes, ma'am. पीएससी को Yes, तो ma'am. श्योर है ना, सरकार पॉलिसीज बनाएगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टाफ, तो वो श्योर है, इसलिए मैं पीएससी में जाना चाहता हूँ, प्राइवेट में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. जी. क्लियर हो गया? तो ये Yes, मैं ma'am. आपको मल्टीपल चीजें दे रही हूँ, उनमें से कोई भी चीज को चूज कर लो, दैट इज योर Yes, ma'am. चॉइस। Yes, ma'am. उसके बाद आता है contribution towards nation. Ma'am, I would say that I've not done much of the contribution, but the minute I could do is I tried to volunteer. I had volunteered in this part. I would like to help the poor and needy, जो भी आप करते हो तो वो आ जाता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं किया, बट छोटा सा मैंने ये चीज की है। Yes, देन इट इज, आप स्वॉट स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपनी आप बता रहे हो। स्ट्रेंथ yes, में आप ma'am. बोल रहे हो ऑप्टिमिस्टिक, आप उसको इतने अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाते हो। ठीक है, स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है, मैम आई एम अ पर्सन हु इज गुड लर्नर, हु इज वेरी अडेप्टेबल इन नेचर। ठीक है, आप अडेप्टेबल हो सकते हो, आप कहीं भी शिफ्ट हो जाओगे तो अडेप्ट कर लोगे। मैम आई एम वेरी मच सोशल, आई मेक फ्रेंड्स वेरी इजिली। मैम आई एम अ Yes, ma'am. पर्सन हु इज लाइक वेरी प्रैक्टिकल इन अप्रोच, रैशनल, हार्ड वर्किंग, ट्रस्टवर्दी, कुछ भी बोलो जो आपको सूट और आप उसको हेल्प कर सको, दिमाग कर सकते हो। लीडरशिप, वो भी आप बोल सकते हो, एक अच्छा लीडर हो आप। ठीक है, एंड जी, ma'am. वीकनेस, so it's fine that you're not very fluent in English. And also you could Yes, say, ma'am. ma'am, I lack artistic expressions. Like there Yes, is ma'am. a kind of, you can say, आप गर्ल्स होती हैं वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस वाइज बात बदल बदल के चेंज करके बात करती है, वॉइस में ये चीज कम होती है। एंड आई डोंट नो मच अबाउट यू राइट नाउ। तो आपके No, स्माइल तो है, वेरी स्माइलिंग फेस, बट इट इज नॉट अबाउट यू कैन, यू मे बी यू कैन से इट और नॉट, right? Ma'am, I cannot say no to someone. Ma'am, I think that I lack the stuff like I don't do much of the physical exercises, which I think that is a big weakness in today's time. yes, Weakness आती है, तो कुछ भी ये बताओ। yes, ma'am. ठीक है, ये नहीं बोलना Yes, हॉबीज ma'am. है नहीं, आई आई एम नॉट एबल टू ऑफन प्रैक्टिस हॉबीज करंटली, बट मोर आई एम इंडल्ज इन स्केचिंग एंड ऑल दैट। मैं स्केचिंग वगैरह ज्यादा करता हूँ, तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आप टीम को कैसे लीड करोगे, आपने लीडरशिप स्किल्स परफॉर्म किया द सेम वे यू टोल्ड, राइट? सो मैम, Yes, आई लेट अ टीम एंड फर्स्ट इट इज ऑलवेज अबाउट डेलीगेशन ऑफ वर्क। मैं टीम को डिवाइड करूंगा इन मल्टीपल ग्रुप्स में और डेलीगेट करूंगा, जैसे जो मेरा रोल है फिर वो जूनियर्स को चला जाएगा। ठीक है, एंड देन इज कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी बनाना, उनसे फीडबैक्स लेना, वो भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो yes, डेलीगेशन ma'am. एंड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी इज देयर, कीपिंग एन ओपन कम्युनिकेशन इन योर टीम, दैट Yes, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ yes, डू ma'am. कीप योरसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड, या कैसे आएगा? मैम, आई डू बिलीव इन सेल्फ मोटिवेशन एंड आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड बाय लिसनिंग टू सम मोटिवेशनल वीडियोस, by talking to my parents, by talking to my friends. It can be by watching some kind of a podcast. कुछ भी आपका हो सकता है सोर्स ऑफ मोटिवेशन, राइट? एंड इट इज नॉट कि Yes, फिर ma'am. होता ही नहीं आपका, आप फेल हो जाते हो तो कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन का सोर्स होता है ना। ये तो नहीं मैम, मेरे Yes, को ma'am. तो, मैं स्कॉलरशिप के लिए मेरे को तो मोटिवेशन ही मिलती रही आज तक, दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू स्टेट इट आउट। आप बल्कि इंट्रोडक्शन में बता सकते थे दैट व्हेन आई गॉट अ स्कॉलरशिप थ्रू आउट माय एकेडमिक्स टू डू दिस एंड दिस थिंग, वो आप एक पॉजिटिव हाईलाइट करो। वो आपको पता क्या क्या हाईलाइट्स है, वो आपको मुझे बताने पड़ेगा और मैं बताऊंगी कहाँ आपको करना है, राइट? एंड सिमिलर वे आई वुड से इट आउट एज, जैसे 50 को लीड किया वही आपका आ गया, डेलीगेशन वगैरह चीजें आ गई, टीम लीड वाला भी आ गया, डेलीगेशन एंड ऑल दैट आ गया। क्लियर? तो इट इज yes, फाइन, ma'am. लेकिन अभी आंसर्स को और रिफॉर्म कीजिए। मैम, ठीक एक चीज और पूछना था, जैसे कि है, मैम एंड अगर लास्ट, मैं कहीं how would you keep your employees motivated? It is not about telling them and all that. It is ma'am by appreciating them, उनको appreciate करके, by having empathy towards your employees. Empathy means कि उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, क्या जरूरत है क्या नहीं है, ओपन कम्युनिकेशन रखना ताकि कोई जूनियर लेवल वाला भी आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके। दैट्स अ वे। आप पूछिए आप अपने क्वेश्चंस। मैम, जैसे कि मेरा इंग्लिश उतना फ्लुएंट नहीं है मैम, तो क्या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ हाँ, साउथ में? बाइलिंगुअल जाओ, बाइलिंगुअल जाओ। यस मैम, क्योंकि हम साउथ में सुने थे कि बहुत केवल इंग्लिश में बात करते हैं वो लोग, इसीलिए। दैट्स फाइन, लेकिन अब अगर आप बीच में अपना बाइलिंगुअल क्वेश्चंस में जा सकते हो, इंट्रो को एक लैंग्वेज में करो, बाकी यस क्वेश्चंस मैम. में पीएचडी में देयर इज नो दैट प्रॉब्लम। आप जा सकते हो किसी भी दोनों लैंग्वेजेस में से, मिक्स में जा सकते हो, बाइलिंगुअल में जा सकते हो। ओके क्लियर? मैम. दैट्स नॉट अ यस मैम. प्रॉब्लम।
फैक्ट में हो गया, सेल में हो गया, इवन BARC, DARDO, ये ज्यादा जो टारगेट करते हैं, ये टारगेट करते हैं टेक्निकल वाला। ठीक है, मतलब मोर अमाउंट इन इट। HR आते Yes, sir. हैं, बट डिपेंड करता है पैनल। सी इफ यू हैव अ गुड गेट रैंक ना, आपका गेट रैंक बहुत स्ट्रांग है, ऊपर है, राइट, तो आपसे HR ज्यादा पूछा जाता है। गेट रैंक Okay, पीछे ma'am. है, टेक्निकल ज्यादा पकड़ा जाता है। दैट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से, फीडबैक जो पुराने बच्चे हमेशा बोलते हैं। ठीक है, बाकी Okay, हाँ ma'am. सेंटर पे डिपेंड करता है, आपकी सिटी के करंट अभी प्रैक्टिस करने हैं। फैक्ट के रिलेटेड Yes, हम sir. प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस फर्टिलाइजर्स का कुछ पूछूंगी मैं, क्यों इंटरेस्ट आया है इस जगह पे, और इसी PSU को क्यों टारगेट कर रहे हो, और कौन से PSU को टारगेट कर रहे हो। सो वी विल बी डिस्कसिंग इट आउट। Thank you, ओके, ma'am. ओके, ठीक है।